आज हम लोग हर्बोलॉजी क्लास पे पेड़ पौधों के बारे में सीखेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ गेमर खिलाड़ी और हर्बोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये चाबी का पीछा करना है। पीछा करो, पीछा करो। कहाँ जा रहा है? चाबी कहाँ जा रहा है? रुक रुक रुक, चाबी का पीछा करना है। ओके, थप्पड़ मारना है इसको, चाटा मार के लाइन पे लाना है। ये सब नौटंकी यहाँ नहीं चलेगा। ये घुस जा। ठीक है, चलो अब हर्बोलॉजी क्लास चलता हूँ। यहाँ पे क्या है? यहाँ भी एक मिशन है। ये कौन है? I really have made a mess of things. क्रेसिडा ब्लूम। अब क्लास जाऊं या इसका? नहीं, मैं क्लास नहीं जाने वाला, क्योंकि देखो बेचारी प्रॉब्लम में परेशान है। अब इसका क्या प्रॉब्लम है, मैं अब क्यूरियस हूँ। क्लास में ध्यान नहीं बैठेगा, पहले ये सॉल्व कर लो फिर क्लास जाऊंगा। हर्बोलॉजी क्लास बताओ। Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Oh. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madam Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. ठीक है। Why did Amit tell you on you? हाँ अमित ये क्या कर रहे हो तुम? Why did Army tell Madam Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Oh. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. अमित impressed है, इसलिए वो बड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन उसने गड़बड़ कर दी। I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. Oh. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. मामला सीरियस हो गया। अभी डायरी का बात है, वो डायरी लाना है। उससे पहले ये इम्पोर्टेंट। यस, या वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी सेटिस्फाइंग। ठीक है, उसका डायरी। खोलना। I'm going to have to use Got it. Only 4 more to go. ऊपर में एक Revelio. वहाँ भी आजा। This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Today was a good day. That is until Gareth splashed whatever ridiculous concoction he was creating all over my perfectly stewed lace-wing flies. Had to empty my entire cauldron and start all over again. He's such a menace. Thinks he knows everything there is to know about potions, always disrupting Professor Sharp's class with his experiments. I'm utterly convinced that if he wasn't Professor Weasley's nephew, he would have been expelled by now. Our broth smokies again tonight for dinner. I am becoming more partial to them now, although I still prefer meat pie. Revelio. वहाँ पे उड़ रहा है। आजा। ऊपर चढ़ना है, ऊपर। Revelio. देखा था मैंने कहीं ऊपर।
was known for his liberal use of the silencing charm at the slightest sneeze. Silencing charm use कर देते थे, अगर कोई थोड़ा भी आवाज निकाला तो गया. Silencio! Accio! और कितना बाकी है? और एक. Revelio! Same since Black took over. Lucky for us, we have Professor Weasley. इस तरफ है क्या? लास्ट बाकी है. ओ रहा. Accio! आजा. हो गया. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Let's take it back to Cressida. बेचारी बहुत टेंशन में है. उसका थोड़ा टेंशन दूर कर देता हूँ. वैसे क्रेसिडा को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देसी मैजिकल काउबॉय उसका हेल्प कर रहा है. Any luck finding my diary and the rest of my books? डायरी मिल गया. खुद देसी मैजिकल काउबॉय तुम्हारा हेल्प कर रहा है. डायरी कैसा नहीं मिलेगा? Here is your book, Cressida. Here is your book. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief! Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you go. और एक है perhaps rewards to keep the diary a secret. Reward option. ठीक होगा कि नहीं? देखता हूँ. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. Yeah. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Yeah. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Okay. नहीं बेचारी को. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. मैंने पढ़ लिया तुम्हारा डायरी. Levioso! Accio! Incendio! ओह इस पे आग लगाना है. इस पे आग लगाने से तब. ओके. इस पे सॉरी ग्लोब, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए करना पड़ेगा. आग लगा दी. अब कहाँ पे जाऊँ? ओह यस, Herbology. Watch what you're doing. What? Revelio! Herbology देखो. ये ग्रीन हाउस. या ग्रीन हाउस है ये. एक मिनट लॉक कर लो इसको. हॉगवार्ट्स का ग्रीन हाउस, फेमस, वर्ल्ड फेमस. और पेड़ पौधे. पानी निकल रहा है यहाँ से देखो. पानी निकल रहा है. ठीक है तो हर्बोलॉजी क्लास के लिए क्या तुम लोग तैयार हो? आई एम रेडी. ऐसा ड्रेस पहन के मैं जाऊंगा. यूनिफॉर्म नहीं, चेंज करता हूँ. इसका डिजाइन दिखने में आउटफिट, ऐसा आउटफिट ये सब बेचना पड़ेगा बाद में. ये क्या है? एक मिनट, इसका आउटफिट कैसा है? ओह सुपरमैन. थॉर. आई एम थॉर ऑफ एस्गार्ड. ये है स्ट्रिम्ड स्कूल रोब, डेकोरेटिव स्कूल रोब. ये ठीक है, डेकोरेटिव स्कूल रोब. ये भी सही था, ये भी ठीक है, लेकिन क्लास के टाइम मुझे ये पहनना अच्छा लगेगा. ये देखो बेज भी है रेवेनक्लो का. यस, क्लास के टाइम में ये पहनूंगा. थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा. हैट, नो हैट. क्लास के टाइम नो हैट. और बाकी सब ठीक है. 29, 28. All right. चलो. Professor, I'm here to. I almost bought an owl in Diagon Alley. Went with a cat instead. Odd-coloured eye, and it quite appealed to me. My mother was shocked the first time I sent her an owl from Hogwarts. She'd never seen anything like it. She's a muggle, so of course that makes sense. What? Don't
don't make that face. I've heard that Isaac Cooper receives several owls a week from secret admirers. I suppose he is rather dashing. No one sends me owls. Can't remember the last time I got one. Not even on my birthday. How do owls know where to deliver? Revelio. इस पेड़ का भी स्पेशलिटी है. क्या है इसका? ग्रीन हाउस ट्री situated at the center of the Hogwarts greenhouse. This giant tree has a system of roots as deep, reaching and convoluted as the school's dungeons. बहुत नीचे तक जाता है इसका रूट्स. और ये लड़की मगल बॉर्न है, मतलब इसके माता पिता जादूगर नहीं है, मैजिक नहीं है. She is first generation, yes, हाँ फर्स्ट जनरेशन है ये मैजिकल. ओ कहाँ गया? डरा दिया मुझे. How do you do? I used to write to my parents every week. Accio. Remember the last time? Yeah, You green. can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. थैंक यू फ्लू पाउडर इन्वेंट करने के लिए. मैं फास्ट ट्रेवल कर पा रहा हूँ आपकी मेहरबानी से, मैडम इग्नेशिया. थैंक यू. अरिगाटो. ओह, मैं पहले ये सब देख लूँ. कलेक्ट डिटेनी. हाँ, रेवेलियो. ओह, मतलब क्लास शुरू करने से पहले मैं ये सब कलेक्ट कर लूँ. मैं कलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर चीजें. नाइस. ओह, नीचे कुछ है. क्लास करने जाऊंगा पहले ये सब सामान ले लूँ. ओह अच्छा, ये यहाँ गायब होके आना पड़ेगा ये, वरना नहीं खुलेगा. वरना ये नहीं खुलता. गायब होके आने से ये इसको पता नहीं चलेगा. 500 गोल्ड कॉइन. यहाँ पर बहुत सुंदर है, सैकुरा ट्री जैसा. हाँ, सच में ऐसा जगह जाने का मन कर रहा है मुझे अब. बहुत मैजिकल भी है और सुंदर है बहुत. बहुत सुंदर है. मैं बोलता रहूंगा सुंदर है बहुत. मुंह दर्द हो जाएगा फिर भी मैं बोलता रहूंगा. वेरी अमेजिंग. क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा मुआयना जगह का. Revelio. सब क्या है? मेलो स्वीट, फ्लक्सवीड स्टेम, यहाँ पे एक तिजोरी है. तिजोरी भी नहीं, चेस्ट. हाँ तिजोरी. वो सब कुछ मिला. ब्लू कैप. डिफेंस अच्छा है इसका. डिफेंस 23 है. ठीक है, बट अभी कैप नहीं अभी. नो कैप. यस, ठीक है. इस तरफ Revelio. नहीं है, उस तरफ है कुछ. नीचे भी है. रुको. What are you up to now? I'm up to no good, ma'am. I'm up to no good. बहुत कुछ है यहाँ. वाओ, वेनस फ्लाई ट्रैप जैसा. मांस भक्षी पैर. वेनस फ्लाई ट्रैप पिचर प्लांट जैसा ही होता है एक. ठीक है. डिटेनी से पोशन देखता हूँ. आप इन्वेंट नहीं, कलेक्शंस. पोशंस में क्या क्या? लीच, स्पाइडर फैंग. इसके लिए डिटेनी लीव्स चाहिए. हॉर्क्लम्प जूस. अच्छा, मैं बना सकता हूँ. डिटेनी यहाँ पर है. हॉर्क्लम्प जूस मिला था. Revelio. मैंड्रेक है ये शायद. ठीक है.
Dear Professor Garlic, how very thoughtful of you, and to remember that strawberries are my favorite. They are as sweet as can be. It's no wonder muggles love them so much. Everything you cultivate seems to be of such high quality, from bitter root to berries. I do hope that my darling niece can learn this skill whilst under your tutelage. Lenora so adores you, as do all your students, I am sure. Warmest regards always, Eleanor Everly. मतलब प्रोफेसर गार्लिक को सब पसंद करते हैं. फेवरेट टीचर, वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स. Revelio. शायद सबसे प्यार से बात करती है, अच्छी तरह समझाती है. हाँ, एलो हमरा सीखना पड़ेगा. एलो हमरा सीखना पड़ेगा, तब लिटरली बहुत सारी दरवाजे खुल जाएंगे. वेट, क्या हुआ? अच्छा, रात था इसलिए क्लास शुरू नहीं हुआ. अब दिन हो गया. बिगिन. ओह, क्या दे रही है? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Good morning, Professor. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. What's up, We do Sebastian? look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. खींचो. Quickly! Place your mandrake in the new pot and patch out the soil! Whew. Magical plants. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Mandrake. मुझे याद है. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. मुझे याद है वो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में मैंड्रेक्स का यूज हुआ था. तब वो बेसिलिस्क ने सबको पेट्रीफाई कर दिया था, तो इससे दवाई बनाया गया था सबको नॉर्मल में लाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए सबको. यस, मैंड्रेक. इसका चीख से लोग मर जाएंगे, चीख सुनने से. और ईयरबड्स लगाए. ईयरबड्स मतलब कान ढक के रखने से, कॉटन से कान ढके शायद इन लोगों ने, तब थोड़ा ठीक हुआ. अभी तो छोटे बच्चों, क्या बोलूं, छोटे मैंड्रेक्स का आवाज सुनने से लोग बेहोश हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, और जादुई बड़े मैंड्रेक्स तो लोगों का जान ले लेंगे. What's up? The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. हमारी नई प्रोफेसर बहुत सबसे अच्छी तरह बात कर रही है, और एक को तो एक्स्ट्रा स्पेशल स्वीट, एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ खाने का चीज दे दिया उसके आंटी के लिए, घर के लिए ले जाओ. Yes, Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea.
Sebastian, Now, Madame Kagawa what's said up? she's never seen anyone with such form on a broom. She even had the rest of the class watch me to see how it's done. इससे बात कर सकता हूँ ना? What is this? Revelio. इससे बात कर सकता हूँ ना? I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Fig और मैं investigation कर रहे हैं. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. ये वो नमूना है जो हमें डाउन दे रहा था. स्लिदरीन गाउंट वोल्डेमॉर्ट का पूर्वज. एक नंबर का. देखने से ही पीटने का मन कर रहा है इसको. अभी बोल रहा है प्रोफेसर गार्लिक और अच्छी तरह सावधानी से मैंड्रेक को हैंडल करना चाहिए उनको. तुम सिखाओगे? मैं प्रोफेसर को तुम सिखाओगे मैडम को? जाओ तुम ही सिखाओ हमें. क्या यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं तुम. जाओ सिखाओ हमें अगर इतना ही ज्ञानी हो तुम. Incendio. What's up? What's up, ma'am? Ma'am? Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I enjoyed it. I nearly went deep. अरे मजा आया. मजा आया. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. Thank you. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. हमारा खुद का See how to balance table. my star thistle arrangement. Miffler's fancy or roses? यहाँ पर Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. ये है डिटनी. मेलो स्वीट, मैंड्रेक, नोट ग्रास, वेनोमस टेंटेकुला. ओह हम वेनोमस टेंटेकुला ये जो है यहाँ पर ये टेंटेकुला इसको ये भी हम लगा सकते हैं. ओके ओके ओके. वैसे अभी इसी को लगाते हैं. 10 मिनट में बड़ा हो जाएगा. 9 मिनट इल्स 1. ठीक है बड़ा हो. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Oh yes, no. Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Magical plants, magical animals, सब कुछ अजीब और गरीब और खतरनाक है. खतरनाक होते हैं. अभी मैम बोल रही है, प्रोफेसर बोल रही है कि chewing cabbage. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. What's up? Nice to meet you. Nice to I'm meet you Leander. too. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Chinese chomping cabbages. उंगली बचा के बोल रही है मैम. उंगली अरे खोल ना. उंगली बचा के. और मजा आएगा. I like it. 8 मिनट 27 सेकंड में इंस्पेक्ट. ठीक है. यही देख रहा है पहले से. What should I be doing right now? I'd like you to get some hands-on experience with the Chinese chomping cabbages. Chinese chomping They're in the cabbages. greenhouse, just across the footbridge. Mr. Pruitt will assist you with them. और उनको संभालने के लिए मैम प्रोफेसर ने
कुछ डमीज का भी बंदोबस्त करके रखा है। मुझे लग रहा है उन चाइनीज को चॉम्पिंग कैबेजेस, नाम सुनकर लग रहा है पिरान्हा जैसा दांत होगा उनका, कुछ भी हो सकता है। Nice work in defense against the dark arts, by the way. Thank you. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well. Thank you. Thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Yeah. Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And, Ravenclaws too. At least you did. सेबेस्टियन के बारे में बुराई मत करो, समझे? प्लीज, बुराई मत करो ऐसा। वो एक सच्चा दोस्त है। स्लिदरिन हुआ तो क्या हुआ? He is loyal, भरोसे का काबिल। ग्रिफिंडोर, स्लिदरिन, इन दोनों में दुश्मनी है। ये हाउस दुश्मनी मेंटेन मत करो। स्कूल में सब लोग एंजॉय करो, अपने एक दूसरे के साथ मिलके रहो। ये सब क्या हाउस एनिमी, ये Here we are. स्लिदरिन बदमाश, ग्रिफिंडोर अच्छा, ये सब ठीक बात नहीं है। Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. ओ, हम कैबेज यहाँ पे मारना पड़ेगा। Attack the, कैसे मारो? How? Hold tab and tab. ये खुला ना, यही तो मैं सोच रहा था, ये कब मिलेगा? Potion released to equip. Open the tool wheel and assign the Chinese jumping cabbage when tap. और ये क्या है? वो जानवर भी है, ब्रूम। ओके, उड़ने वाला, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये क्या है? सींग वाला ड्रैगन जैसा कुछ दिख रहा है। ड्रैगन भेड़ का मिश्रण। I like it. अब क्या करूं? Then tap. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. It did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Okay. I suppose they could come in handy, yeah. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Okay. Ooh. Take your time. I'll see you back in class. ये मुझे बैटमैन का यूटिलिटी बेल्ट जैसा लग रहा है ये। कितना कुछ लेस बैटमैन जैसा मैं रेडी हो जाऊंगा। डार्क विजार्ड्स एनिमीज रैन रॉक को पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज से पाला पड़ेगा उसका नेक्स्ट, उसको पता नहीं। अब मजा आएगा। Revelio. क्या क्या मैं रखूंगा यूटिलिटी पर? अरे यहाँ भी है। Dirigible plums. This orange reddish like fruit floats upside down as it grows. Some believe it can enhance one's ability to accept the extraordinary. खा के देखो एक। एक्यो नहीं होता। चल के प्रोफेसर को बताता हूँ। खुलेगा? ओहो, where is the professor? Okay, इधर। Professor. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom.
Don't care much for plants, honestly. एक है as am I, plants offer so much. ये रखता हूँ. बेकार में टॉक्सिसिटी फैलाने का मन नहीं मुझे. Magical plants have so much to offer. Exactly. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Okay. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendship. Revelio. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Incendio. अच्छा मेरा प्लांट का क्या? ओह 2 मिनट है. इतना देर क्यों लग रहा है? फटाफट एक बार में बड़ा हो जाओ ना. जादू नहीं है क्या तुम्हारे पास? ऐसा कोई जादू नहीं है जिससे प्लांट फटाफट बड़ा हो जाएगा? जैसे हाशिरामा सेंजू का मोकुतोन, एक जुत्सु से बड़ा पेड़ उग जाता था. पेड़ों का जंगल उग जाता था एक बार में एक जुत्सु से. वैसा जादू चाहिए मुझे मैम. क्या ऐसा कोई जादू है जिससे यस ये शॉट अच्छा है. रहने दो, बहुत झमेला है. कटसिन से मैं थंबनेल बनाऊंगा. बहुत झमेला है ये सब. कटसिन से थंबनेल बना लूंगा. बहुत झमेला है ये सब. बढ़ जा भाई, वरना बाद में आके देखूंगा. अभी कुछ दूसरा कुछ काम है कहीं. क्वेस्ट पोशन क्लास जाना है. यस Incendio. कातोन गोकाकी ओनोजुत्सु. हो गया मेरा पैर हो गया. टेनी. ओह कंटिन्यू बढ़ता रहेगा यहाँ पे. ठीक है बनते रहो तुम, मैं चलता हूँ. I've always said that travel broadens the mind. पोषण क्लास चलता हूँ. पोषण यहाँ पर है. हाँ मैं गया था, डंजियन टाइप था वहाँ. यस पोशंस क्लास. अटेंड पोशंस क्लास. अब अगर ये पोषण टीचर भी सेफरस स्नैप जैसा वैसा होना नहीं चाहिए प्लीज. पूरा मूड खराब हो जाएगा वरना. नीचे है क्या? नीचे डंजियन एरिया में या अच्छा जब मुझे ब्रूम मिलेगा जादुई झाड़ू तो क्या मैं कैसल के अंदर उड़ा पाऊंगा जादुई झाड़ू? देखना है मुझे, ये देखना है. जादुई झाड़ू मिलने से मैं हर जगह उड़ के जाऊंगा. पैदल चढ़ना पुराना जमाने का बात होगा तब. पैदल नहीं चलने वाला, झाड़ू से चलूंगा. Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow Revelio. It would make him look completely incompetent, which he is. यहाँ पे चाबी है. चाबी. अच्छा करो चाबी का. ये रहा. ये ले, एक झापड़ में लाइन में आ गया, सीधा हो गया चाबी. ये नखरेबाजी मेरे साथ नहीं, समझी? चलो अब क्लास चलता है. Revelio. प्रोफेसर स्नेप जैसा बेकार नहीं होना चाहिए ये क्लास. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Yes! Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp.
The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. इन्हीं के साथ तो बात कर रहे थे मिस्टर फ्रीग और बचा और लंगड़ा रहे हैं शायद पुराना घाव Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Right? बन गया पोशन इज रेडी कितना सारा बोतल भर जाएगा इतना बड़ा बर्तन में बना रहा है पोशन हीलिंग अमित ठक्कर जी I see most of you have not forgotten how to stir. बन गया मेरा Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your Herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Okay. कहाँ पर मिलेगा? Hello, Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. प्रोफेसर शार्प ऑर्डर थे तो मतलब पुलिस विजार्डिंग पुलिस तो तभी बेचारे घायल हो गए थे शायद इसलिए वो बोल रहे थे सब घाव भर नहीं सकता ये पोशन सब घाव हील नहीं कर सकता कलेक्ट Revelio. कलेक्ट एश्विंडर एग कहाँ पर है My parents considered keeping me home from school this year. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? You heard correctly. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Hey, Bit of a Weasley. prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'm not sure. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. All right. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. ये कुछ गड़बड़ करेगा क्या बना रहा है पता नहीं क्या बनाएगा Revelio. Fwooper feather बहुत प्यारा feather और कुछ है यहाँ पर ओ मैं यहाँ पहले आया था ये देखो ये बॉक्स खुला हुआ है Your potion should not be that color, Miss McDowell. ये लो तुम्हारा Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Okay.
proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Come on, जल्दी. एक बोतल ही बनेगा. 24 सेकेंड. ओ, इसका बनने में भी थोड़ा देर लगता है. फिर भी कम से कम उस डिटेनी प्लांट जैसा टाइम तो नहीं लगेगा. उसका 3 मिनट था क्या? बन जा. हीलिंग पोशन भी बनाना है. बाद में शायद टाइम घटेगा. हाँ? बनाओ जितना हो सके बनाओ. उस तरफ मेरा डिटेनी का प्लांट हो गया कंप्लीट. अब तक तो बड़ा हो गया होगा. मैक्सिमम पोशन भी बना लेता हूँ. इंक्रीज द ड्रिंकर्स स्पेल डैमेज फॉर ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. इसके लिए स्पाइडर फैंग की ज़रूरत है. स्पाइडर फैंग एक इंग्रेडिएंट है. वन ऑफ द 2 इंग्रेडिएंट्स. मतलब स्पाइडर्स का शिकार करना पड़ेगा. उनकी शामत आ गई है. बेचारों का किस्मत खराब है. स्पाइडर फैंग इज नेसेसरी इस मैक्सिमा पोशन में. हो गया एड्यूरस. और मेरे पास एशविंडर एग्स नहीं है. हो गया. अब जाके. And now we add the mallow sweet and that's odd. What's happening? I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. It means a lot coming from your fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. कुछ हो रहा है उस तरफ. मैं देख नहीं पाया. उस विस्ली का पोशन फटते हुए देख नहीं पाया. ओहो, इससे बात करने के चक्कर में. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. Miss हो गया. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Okay. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shah is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. मिस हो गया. क्या हुआ? Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. मैं देख नहीं पाया इसका फटता हुआ कॉल्ड्रन. मिस कर गया मैं. Come on, once more photo, bro. Photo once more. मिस कर गया मैं. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. मैं भी grow करता हूँ. A well-prepared witch or wizard always. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. Okay. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. कहाँ पर practice करो? वैसे toilet. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Toilet पर भी देखा था मैंने. वहाँ पर भी cauldrons रखे हुए थे.
What's up? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. It was nothing you got me into trouble. Nah, ho jayega. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. I doubt it. I doubt it. Follow फिर से पोशन फोड़ते देखना है मुझे. Please do it again. Incendio. Please don't do that. Accio. Levioso. यहाँ पे क्या दिखा रहा है? और ताला level 1 cloak. Ugh, my robes are going to